Good morning, my dear students. This is the physics class of 7th grade. In this class, we will revise chapter number 2. After learning the question answer of chapter number 2, you must write in a separate notebook. Let's start. Chapter number 2, motion. First is answer in one word or one line. First question is, state the type of motion exhibited by a bullet fired from a gun. जो बुलेट फायर्ड होता है गन में उसमें कौन सा मोशन होता है? दैट इज ट्रांसलेटरली मोशन. विच मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन. Second question is, classify the following as linear, circular, vibratory or oscillatory motion. The motion of a swing is oscillatory motion. The motion of earth around the sun is periodic motion. The motion of a cyclist on a plain road is called translatory motion. Number 4, the motion of a falling stone. The motion of a falling stone is also a translatory motion. The motion of a plucked string of a सितार, जो हम तार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं उसका कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेटरी मोशन. कौन सा मोशन? वाइब्रेटरी मोशन. Question number 3, if you are sitting in a moving bus, right? If you are sitting in a moving bus, are you at rest or in a motion? अगर आप moving bus में बैठे हो तो आप motion में होंगे कि rest में होंगे? We are at rest with respect to the bus and in motion with respect to the outside objects. Means हम rest पर होंगे with respect to bus, but with respect to outside objects we are in motion. Fourth question, is your classroom at rest or in a motion? Our classroom is at rest. Fifth question, is the hour end of wall clock at rest or in motion? It is in motion. Next question, what type of motion do the vehicles on a straight road perform? जो व्हीकल्स होते हैं वो रोड पर कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं? दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ अ मोशन डज द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल परफॉर्म? इट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन. द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल परफॉर्म circular motion. Question number 8, an object is hung from a spring, pulled down and left. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने हंग किया स्प्रिंग पर, उसे किया पुल डाउन एंड लेफ्ट. व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ऑब्जेक्ट परफॉर्म? द ऑब्जेक्ट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. द ऑब्जेक्ट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. Question number 9, which type of motion does the feet of the tailor perform while sewing some clothes on sewing machine? कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं टेलर के फीट जब वो क्या करते हैं? कपड़ों को स्टिच करते हैं. Which motion? That is periodic motion. Right? It perform periodic motion. Part B, short questions or answer in 2 lines or 3 lines. First question is, what is motion? An object changes its position with respect with the time as compared to stationary object. It is said to be motion. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है एज कंपेयर टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, इट इज said to be motion. Question number 2, state 3 different types of motion. 3 different types of motion कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन. विच मोशन? ट्रांसलेटरी, ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी. क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन की 2 एग्जाम्पल क्या है? एक तो है हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ. जो अर्थ का रोटेशन होता है वो क्या होता है? पीरियोडिक इन नेचर. और सेकंड इज हैंड्स ऑफ क्लॉक. ठीक है, जो क्लॉक के हैंड होते हैं जब हम जो हमारा टाइम बताते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद बताते हैं. दैट इज द मोशन इज पीरियोडिक. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ
पेंडुलम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम? ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, जो टाइम लेते हैं बॉब टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम और बॉब to make one complete oscillation, that is called time period of pendulum. And your question is what is seconds pendulum? अब seconds pendulum क्या होता है? a pendulum whose time period is 2 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकेंड का वो होगा, वो क्या होगा seconds pendulum. Question number 6, on which factors the time period of a simple pendulum does not depend? ठीक है, वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का नहीं डिपेंड करता? कौन कौन से दो फैक्टर हैं? मास ऑफ अ बॉब, material of bob and amplitude of oscillations, which are the time period of a simple pendulum does not depend on mass of bob, material of bob and amplitude of oscillations. Question number 7, give 2 examples of rectilinear motion. अब हमने 2 rectilinear motions की example बतानी है. कौन कौन सी होती हैं? A car moving on a स्ट्रेट रोड, जब एक कार मूव करती है स्ट्रेट रोड पर. एंड सेकेंड इज फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. सेकेंड वन इज फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. क्वेश्चन नंबर 8, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. अब रोटेशनल मोशंस की 2 हमने एग्जाम्पल बतानी है. मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ अ फैन इज अ रोटेशनल मोशन. कौन कौन सी है? मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ अ फैन आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशनल मोशन. बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर first physics class in which we cover question answers of chapter number 2, that is short questions and very short question. You just revise these questions and write down in the separate notebooks. Thanks and have a nice day.